नागालैंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नागालैंड या उसकी जनता को अनदेखा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सीतारमण ने बताया कि राज्य में युवाओं के लिए एआई आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें भारत की शीर्ष कंपनियां केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक बदलाव लाना है। नागालैंड में डिजिटल स्किलिंग और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। Please do remove from your thought that something is being done. People in Nagaland are being taken. No, on the contrary, I, for one, and I can surely, with some authority, say the Prime Minister of the country as well is keen to develop Northeast. And otherwise, in fact, I'll finish with this line. The AI-related training for youth, AI-related training for youth with top companies of India, participating with both central and state government, is happening in Nagaland. It's not happening anywhere else. So I want that thought from your mind to be taken out that Nagaland or Naga people are being taken for granted. No, on the contrary, we want to reach out and make sure things happen.